ओके एबे डिस्कस करिबा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रो आउ किछि क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ इज एनालॉगस टू 34 नंबर रू स्टार्ट करिबा एम्पियर्स लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the line integral of magnetic field around the closed path which current I is flowing through is equal to line integral सबले equal होगा mu naught into current net current that is option C is correct answer. Next होची the equation of ampere circular law that is B dot dl is equal to mu naught I. Here I is the net current, option A is correct answer. Ampere circular law is used to find the magnetic induction, that is option A. Magnetic induction means B, सेटा को magnetic flux density भी कोई परिवा. The magnetic induction at any point due to long state wire current B is equal to formula कौन पाउचे ना B is equal to long state रा mu naught I by 2 pi r, that is inversely proportional to distance r, so option B is correct answer. Next, if the value of current is flowing in a conducting wire is doubled, then the value of magnetic field produced at a point. यदि current double हो जाए, then magnetic field long state current के conductor जो केते आसीबो ना double भी हो जाओ, कहीं ना current ना magnetic field direct proportional to current, so answer is doubled. The direction of intensity of magnetic field produced at a point due to an infinite current carrying conductor will be एटा हूँ इनफाइनाइट करंट करी कंडक्टर एटा हूँ तार सब मैग्नेटिक फील्ड सो एटा कौन रोचे ना दीटा प्लेन आछी ये गोटे प्लेन ये भी गोटे प्लेन सो दीटा प्लेन परपेंडिकुलर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आर इज बी देन एट डिस्टेंस आर बाय 2 केते आसीबो ना आर बाय 2 रे दैट इज 2b काना मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो डिस्टेंस यदि हाफ हो जिवो ताले मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जिवो. A current of 1 ampere is passed through a straight wire, that is not wire, that is wire, it is lying, some mistake. The magnetic field on the axis will be 0. 20 ampere current is flowing in a long straight current carrying conductor, so formula को use करिबा, that is B is equal to mu naught I by 2 pi r. mu naught जगह put करिबा केते 4 pi into 10 to the power minus 7 into current केते अछि करंट अच्छी 20 by 2 pi r अच्छी 10 सेंटीमीटर ताको मीटर करिबा सो एटा ला 2 so here it is -2 that is -5 here it is 2 so 2 to 4 so answer A is correct answer, that is 4 into 10 to the power -5. A long straight current carrying conductor again same formula use करिबा B is equal to mu naught I by 2r so 2 pi r 5 pi कटि जिवो so it answer is A. Okay, next the strength of the magnetic field produced 10 cm out from infinite long straight conductor is 10 to the power -5. so एठी भी सेमती सेम फार्मूला को यूज करिबा B is equal to mu naught I by 2 pi r B रो वैल्यू देछि mu naught पकेबा 2 pi r पकेला पर I पाउचे 5 एम्पियर. the magnetic induction एठी भी सेमती सेम देखो ये क्वेश्चन टी अलग देछि 4 cm गोटे देछि 12 cm गोटे देछि सो b1 by b2 नै जिबा इज इक्वल टू करंट सेम अछि सो दैट इज r2 by r1 सो b1 देछि 10 to the power -8 पुट करो b2 अननोन r2 पकेबा 12 एटा पकेबा 4 सो आंसर पाइबा A. A long straight wire carrying current 30 ampere is placed in external uniform magnetic field of induction 4 into 10 to the power -4 Tesla. The magnetic field is acting parallel to the so question wrong अच्छी so ये question Biot-Savart law. Next, in a current carrying long solenoid the magnetic field produced does not depend upon, that is B is equal to mu naught Ni, so यहाँ पर depend करे नहीं, option C. current carrying solenoid formula होची mu naught Ni where N is number of turns per unit length. The value of magnetic field inside the solenoid always uniform. एठी solenoid देखो देछि
means length देछि number of turn देछि use कर formula mu naught n into I but n not given, so other formula mu naught n I by total length L. Mu naught given, number of turns total turn given, total length given, current put कला परे एठी हमें आंसर पाउछे a solenoid is 1 meter long and it has 4250 turns. Same formula use करिया V is equal to mu naught n I by L put कला परे हमें आंसर पाउछे एठी 6.28 into 10 to the power minus 2. सॉरी ए केस रे आंसर भूल कहली ए केस रे आंसर आसीबो 2.7 into 10 to the power minus. A long solenoid, same question, सब डाटा गिवन अच्छी यार आंसर आसीबो बी. एठी भी सेमती पायर वैल्यू रखी के आंसर देछि द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस inside the solenoid. Here the answer will be A. There are 50 turns of a wire in not given a question ta out of topic कना एंटर पढ़ाए नहीं. ए टॉरेटर फार्मूला होची म्यू नॉट एन आई सेमती सेम एज सोलेनॉइड बाय करंट करेंगे. देखो ये कैपिटल एन देछि नंबर ऑफ टर्न्स, सो जहाँ देछि हम से अनुसार चॉइस को जीवा. प्रायतः हम स्मॉल एन नियंती डेरिवेशन ले बाय ए करंट करिंग टॉरेड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड सेम आसीबो इक्वल एट होल क्रॉस सेक्शन. टॉरेड इज ए सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ इनटू बेंड इनटू सर्कल. टॉरेड देख मीन रेडियस बाहर करिबा दैट इज आउटर प्लस इनर बाय 2. सो मीन रेडियस पाइला परे बी पकेबा म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आई बाय 2 पाई आर एम. ओके पुट कला परे हमें एठी आंसर पाउछे दैट इज ए. ओके नेक्स्ट टॉरेटर सेमते आ गोटे क्वेश्चन अछि ताको सॉल्व करिबा. सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला, सो आंसर आसीबो बी. निजे सॉल्व करिवो. रिपीट हैला. ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए रिजल्टेंट फोर्स. फोर्स टा सब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ ए वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the particle 0 हम जदि B and V are parallel. Option D. A strong magnetic field is applied on a stationary electron, then so no force, so electron remains stationary. Option C. कारण स्टेशनरी रहिले चार्ज पार्टिकल फोर्स आसीबो नाही. प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कले इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ ए वेलोसिटी v and an electron is projected along the lines of force. What will happen to the proton and electron? देखो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जाउछ माने पाथ हबो सर्कुलर, so there will be no effect on electron because same direction जाउछ. So option B is correct answer. A charged particle is moving with velocity v in a magnetic field of induction B. The force on the particle will be maximum when V and B are perpendicular. Option C. Okay, next, a charge q is moving in a magnetic field, then the magnetic force does not depend upon magnetic force formula होची F is equal to Q V B. So mass ऊपर depend करे नहीं. Next question, a charged particle moving with velocity v is subjected to electric field E and magnetic field B. The particle will go undeflected if. Option D is correct answer. E, V and mu are perpendicular, so that magnetic force and electrical force will be cancelled. An electron is projected along the x-axis of a circular current carrying conductor. एमती अच्छी. Then the electron will experience. देखो magnetic field रहेगा ए direction रे, electron भी सही direction में moving करची. So no force experienced होगा answer. Then Lorentz force formula. Option A is correct answer. A homogeneous electric field E and a uniform magnetic field B are pointing in the same direction. A proton is projected with its velocity parallel to E. It will then proton जदि electric field direction में force experience करिवो
सो तार स्पीड इनक्रीज करिवो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड रो इफेक्ट नाही सो गो ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट with increasing velocity. Option A is correct answer. Okay, next, a charged particle goes undeviated. Okay, next, a charge q is moving in a magnetic field, then the magnetic force does not depend upon magnetic force formula hochi F is equal to q vb, so mass upre depend करे नहीं. Next question, a charged particle moving with velocity v is subjected to electric field E and magnetic field B. The particle will go undeflected if option D is correct answer. E, V and mu are perpendicular so that magnetic force and electrical force will be cancelled. An electron is projected along the x-axis of a circular current carrying conductor. एमती अच्छी. Then the electron will experience. देखो magnetic field रहेगा ए direction रे, electron भी सही direction में moving करची. So no force experienced होगा answer. Then Lorentz force formula, option A is correct answer. A homogeneous electric field E and a uniform magnetic field B are pointing in the same direction. A proton is projected with its velocity parallel to E. It will then proton जदि electric field direction में force experience करिवो so तार speed increase करिवो by electric field. So magnetic field रो effect नहीं. So go on moving in the same direction with constant with increasing velocity. Option A is correct answer. Okay. Next, a charged particle goes undeviated. A charged particle goes undeviated. जदि V और E भितर एंगल आसियो 180 एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रो कांसेप्ट. A proton enters in a magnetic field of flux density given. Then velocity given meter per second, angle given, the force on the particle. So use the formula F is equal to QVB. Okay, so QVB put kale kete asibo. Proton enters a magnetic field given, velocity given, angle given. So use karo F is equal to QVB sin theta. Okay, so answer पाइबा A. सेम ये भी सेमती गोटे क्वेश्चन देख देख फोर्स दे देछि ये वेलोसिटी पचारछि अगेन सेम फार्मूला यूज कर सो एठी आंसर आछि दैट इज 2.5 into 10 to the power 7. An alpha particle enters in a magnetic field of 1 Tesla. सो एठी भी सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर देछि sin 91 है जो तो ऑप्शन आंसर डी आछी आंसर. चार्ज ऑफ 1 coulomb in a magnetic field of 0.5 Tesla perpendicular to the magnetic field. The force experienced by it is 5 Newton and velocity. Again use करो same formula F is equal to QVB sin theta sin 91. Velocity पचारछि velocity is equal to F by QV. तो F केते हला 5 by Q हला 1 into 0.5 QV एटा. So answer is 10 option A. Okay, next टू एटा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देछि एनर्जी पचारछि फोर्स केते. सो ए केस रे हमें काइनेटिक एनर्जी को जीवा हाफ mv स्क्वायर रो इज इक्वल टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 to the power minus that is 13. ओके सेतुरे हम पाइ जीवा कोन ना वेलोसिटी पाइला परे F is equal to QVB पुट करिवा तापरे हमें फोर्स पाइ जीवा. सो आंसर आसीबो एठी ए केस रे आंसर आछि दैट इज